वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडीज। कुछ लास्ट दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से, सो सॉरी फॉर दैट। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन आइदर बी बाय नेचुरल मेथड्स और बाय आर्टिफिशियल मेथड्स। सो हम लोग पहले नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बात करेंगे। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी डन बाय स्टेम, रूट एंड द लीव्स। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम्स इन नेचुरल मेथड्स। सो पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक और sugar cane are the examples of vegetative propagation by stems. If we talk about potato, we know that some eyes, we can say eyes are present. Eyes, or we can say nodes are present. Eyes or nodes are present on the surface of the potato. Okay, so that eyes or nodes give rise to the new plant of the potato is known as vegetative propagation by stem in potato. If we talk about the onion, so some green leaves are present. That green leaves give rise, that green that is stem, that are stems that give rise to the new plant. And when we talk about ginger, ginger is also another modified stem which has nodes. Ginger has nodes and the internodes. So axillary buds are present. Axillary buds are present on the internodes. So in the ginger, axillary nodes and axillary nodes or axillary buds, we can say axillary buds. Axillary buds are present at the nodes, at the nodes which give rise to the new plants when we plant in the soil. So in potato, eyes or nodes are present. In ginger, no, axillary buds are present at the nodes which give rise to the new plants. The stem of a common grass, like the stem of common grass, mint, grow horizontally on the surface on the ground. Okay, so new roots and shoots develops at the nodes which later give rise to the new plant. If we write the stem of the common grass, mint, grow horizontally on the ground. Okay, so this new roots and shoots can develop on the nodes. Okay, on the screen you can see a picture of a potato, image of potato. Here we can see eyes and nodes. Okay, a blue mark is given where you can see eyes or nodes. From that a new plant grows. Okay, now the another picture came, that is of ginger. Okay, and from the green part that give rise to the new plants, that are axillary buds. Okay, that are axillary buds which give rise to the new plants. Okay, right up to here we will continue. So हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम्स देखा, हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स देखेंगे। सो रूट्स ऑफ डहेलिया, एस्पैरागस और स्वीट पोटैटो, इन सब में क्या होता है, नंबर ऑफ स्वेलन एंड फ्लैशी रूट्स। इनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत स्वेलन होते हैं और बहुत ही फ्लैशी रूट्स होते हैं। इन रूट्स में स्टोर्ड होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में फूड स्टोर्ड होता है इनकी रूट्स में। सो ये कैपेबल होती है डेवलपिंग में एक न्यू प्लांट्स में। आप लोग एक स्क्रीन पे इमेज देख रहे होंगे
जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स इन स्वीट पोटैटो। इन स्वीट पोटैटो, जो स्वीट पोटैटो होता है वो रूट्स होता है प्लांट का। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन by leaves. Okay, vegetative propagation by leaves. Most striking example of such propagation are the leaves of Bryophyllum. Leaves of Bryophyllum. Okay, so we have seen in the leaves of the Bryophyllum, young platelets are present in the growing in the notches in the margin of the leaves. So in the margin of the leaves, young notches, the plantlets are present. From there, the young platelets deattach and grows a new plant. So if we plant the Bryophyllum leaves in the soil, we can get a new plant. Okay. Today we have studied about the vegetative propagation by stem, which has seen in potato, ginger, onion, vegetative propagation by roots on Dahlia, asparagus, sweet potato, and vegetative propagation by leaves on the leaves of Bryophyllum. So the next lecture we will continue by the natural methods of vegetative propagation is completed. Next lecture we will continue by artificial methods of vegetative propagations. So if you like the video, then subscribe. Thank you.